So this is Kids Craze, that is dreams and themes. You have to enjoy your birthday, you have to enjoy the very celebration that you wait whole year. पूरे साल हर बच्चे को इंतजार होता है अपने जन्मदिन का, और जैसे ही वो दिन आता है मॉम, डैड और पूरी फैमिली परेशान हो जाती है किस तरह उस बर्थडे को यूनिक और नया मनाया जाए. लेकिन अब आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं बिकॉज आपके साथ है किड्स क्रेज that would make your kid totally crazy when he enjoys the theme and the dreams that we give from Kids Craze. So here I have Mr. Shelly Grover, who has given this wonderful concept of Kids Craze, that is dreams and themes. I want to ask you something really simple. How did this get into your mind कि इंडिया में कुछ ऐसा आना चाहिए जो बच्चों को खुश कर पाए? Actually, this concept started in October. I met Clara in India and we were just talking. We were going to Agra and we were just talking about this. Ki yaar, there is no place for kids in India, and why don't we start one? We wanted to start a very small place. I have an office in Lodi Colony in which I wanted to start this small place for kids to have their birthdays. Actually birthdays, okay? But I met Clara and she told me, why only birthdays? We should have a celebration place for kids, because there is no celebration place for kids in India like this. So we thought of a concept and it was like a passion and we started it and it came up like this. So this is really wonderful. How do you think the Indian people would react to this? क्या आपको लगता है कि marketing strategy होगी? How will people react to Kids Craze? See, हम बच्चों के डैडी हैं. We are kids, Papa. So whatever they want, we'll give them their dreams and whatever. Actually, whatever they dream, we'll try to fulfill that. This is wonderful because you have this wonderful concept that you want to fulfill all the dreams of all the kids, and I'm sure this is going to be a super success. Thank you. Thank you. Hi ma'am, a very good evening to you. First thing is I want to ask you, how do you like the name Kids Craze? It's a very interesting name because it signifies that the place is all about kids, and I loved it's one of its kind in Delhi and I think India, and I am very excited because I've got twin boys and they are under the age group of they're 11 plus, so this is an ideal place for a birthday party for them. And even I'm sure all the friends are going to do a lot of parties here. So this is going to be definitely a hit place. All right. So I think all the places are really beautiful. Which one is the favorite of your twin boys? They loved the food area, which has got a pool inside. So the dip pool is a very interesting idea. And everything is very colorful and full of, what kids are all about. So I think the place rocks. Kids Craze. मैंने तो शैली जी को पहले कह दिया कि बच्चे यानी कि भगवान, और आपने भगवान के एंजॉय करने के लिए जगह बनाई है तो ये तो हिट होनी है. बाकी मेरी पूरी यानी कि 85 kg की बेस्ट विशेष इनके साथ है. अरे ये तो ऐसे हम भाई बहन हैं, सेहत से एक ही चक्की से आटा जाता है. बट मेरी पूरी विशेष है सर, और इनके जो आगे प्लान है वो बहुत अच्छे हैं. हम बताएंगे नहीं अभी, जब ये करेंगे आपके सामने तब आ जाएंगे. बहुत ही प्यारी सी बात कही आपने कि बच्चे भगवान हैं. थैंक यू सो मच. So here I have very renowned surgeon of India, that is Dr. Tarun Mittal. I want to ask you something really simple. आपने पूरा Kids Craze घूमा होगा. सबसे पहले मुझे बताइए, how do you like the name Kids Craze? It's very good. The concept is very good. Nowadays, the parties for the kids are very important, and the kids demand that the venue, the place has to be different all the time. So we can plan theme-wise party here. Depending upon 5 halls are there, you can plan it according to the theme, and you can change the theme every year or every time you do a next party. Very well said. हर चीज आजकल बच्चों पे डिपेंडेंट है. Everything is on kids. If you keep the kids happy, the family is happy.
very good place for the kids. एंड सर आपको ये नाम किड्स क्रेज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बिकॉज बच्चे क्रेजी होते हैं, उनकी हर क्रेजी हरकतें क्यूट लगती है. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, गुड नेम, किड क्रेज. So I have a lovely mother-daughter duo here, both of them together and enjoying Kids Craze. I want to ask you something really simple. How do you like the name Kids Craze? The name is very nice. The Kids Craze, I mean, you feel there's something that kids could go crazy about. And maybe that if there's something new here, so you never know, there's more to it. Absolutely. So how do you plan to celebrate your beautiful, gorgeous daughter's birthday? I hope she loves Barbies. She does, but looking at the pool, I thought a pool party should be a good idea. Very nice. Thank you. And a pool party will surely rock. I want to ask the baby doll as well. How do you like the pool? It's deep, but it's fun to jump in the pool, and it's a really good fun. Wow. Thank you so much. So this is Manjot और ये फेमस है सबको हंसा के लोट पोट करने में और आपकी लेटेस्ट मूवी सुपर हिट रही है. वी हैव लाफ्ड अ लॉट एंड नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट दिस इज किड्स क्रेज जहां हम बच्चों को बहुत ही खुश करने वाले हैं. सो गिव मी सम आइडियाज हाउ वी कैन मेक द किड्स हैप्पी हियर. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज सिखाई है, बच्चों को जितना खुश कर सको ना अपने पार्ट से, कुछ भी जैसे भी हो, तो आप हमेशा बहुत ऊपर जाओगे. आपको गॉड बहुत कुछ देगा. तो ये मैं ब्लेसिंग की है अपने पेरेंट्स से और मैं इसीलिए मैं आया यहाँ पे. तो बच्चों को इतना खुश देख के उनके लिए थोड़ा मैंने एक परफॉर्म किया तो उनके कहने पे, तो बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छी टीम्स हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा है. और जो शैली जी इनके ओनर, तो काफ़ी मज़ा आया उनसे मिलके. उन्होंने इतना मेहनत करी है यहाँ पे, तो आई होप बहुत अच्छा जाएगा, ये बहुत अच्छा चलेगा, बहुत फेमस होगा. So, can you tell me what is your favorite theme? या फिर जब आप छोटे से बच्चे थे तो सबसे ज्यादा आप अपने बर्थडे में क्या करते थे, कैसे सेलिब्रेट करते थे अपना बर्थडे? मेरे को तो याद भी नहीं मैं कैसे सेलिब्रेट करता था घर में, लेकिन मेरे मम्मी पापा को याद होगा कि किस तरह वो सेलिब्रेट करवाते थे. पहले हैट्स आती थी वो पहन के, और केक काटना, सब डांस करते थे, काफ़ी मज़ा आता था. अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतना सब मॉडर्न, आजकल के बच्चे इतने बॉर्न टैलेंट है, तो सबको कुछ नया चाहिए, सब बोर हो गए हैं, तो इसलिए इनके लिए बेस्ट प्लेस है किड्स क्रेज. सो द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट दैट इज किड्स क्रेज? किड्स क्रेज बेस्ट है. किड्स क्रेजी होते हैं, उनको कुछ नया चाहिए और हर चीज़ से बोर हो जाते हैं, वो मना कर देंगे. अगर आप घर पे सेलिब्रेट करोगे अपने उनका बर्थडे, कहेंगे नहीं मुझे सेलिब्रेट ही नहीं करना. तो बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, और उसके लिए इतनी अच्छी थीम्स है यहाँ पे और इतना अच्छा एम्बियंस है. तो आई थिंक ये सब बच्चों को बहुत पसंद आया. आई एम श्योर पसंद आया होगा और बहुत मज़ा आया मेरे को भी खुद. मैं खुद बड़ा इनोसेंट बच्चा हूँ, बट ऐसे ही. ओके, सो मंजोत, अब आप दोबारा से कब आने वाले हो और आप फिर से कब आएंगे ये भी बता दीजिए. सस्पेंस है. ओके, सो फर्स्ट आई वांट टू से अ बिग हेलो टू यू. Hello. ओके, व्हाट इज योर नेम? My name is Angad. ओके, अंगद, आपको ये कैसा लगा यहाँ पे आके, किड्स क्रेज और समथिंग एक्साइटिंग? It's a nice place for parties and all. Okay, so I want to tell you, अब आप वंडरलैंड से जब आगे जाओगे, so there is a new hall where everything is related to water. It's a water theme and there's a pool and rain dancing. So एक बार आप वो देख कर आ जाओ, and then I want to know your views that what is your favorite and how do you like the place, right? Okay, so here is Angad back again. Angad, how was it? Did you see the pool जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? Yes, I saw that. I am sure that I'll do my birthday party here only. I'll bring all of my friends and I will make sure. I have told my parents that I will do my birthday party here only. I will have a wonderful rain dance. Good evening, sir. I want to ask you, how do you like the place Kids Craze? How do I? आपको ये जगह कैसी लगी? It's amazing. It's wonderful. Absolutely superb. Okay, so आपने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं एज अ किड? I couldn't get you. आपने बचपन में अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं? Maybe very few. I don't recall. It was long back now. It was long back. So do you have any kid in your house? कोई बच्चा है आपके घर पे अभी? I got one my grandson and one my granddaughter.
Okay, one grandson and one granddaughter. Do you plan to celebrate the birthday here now at the wonderful Kids Craze? Absolutely, yes. Absolutely. So we are really waiting to see you very, very soon. Okay, so first, सबसे पहले मुझे बताइए आपका birthday कब है? 1st March. 1st March. It has gone for the year, but what did you do on your birthday? I celebrated it with my friends and I had lunch. Okay, you had lunch. And how do you like this place? You must have seen lot of things for the birthday are here. What did you like the best? I like the Wonderland. I like that one. Okay, you like the Wonderland. It's beautiful. It's good for girls. Yeah. Any favorite of yours? Alice. Okay, so I would tell you that we have a theme that is Alice in Wonderland also, and next time when you celebrate your birthday, you should be here at Kids Craze so that you enjoy your birthday a lot. Thank you. So what is your name? Rishabh. Rishabh, आपका birthday कब होता है? 26 July. 26 July, yesterday. So आपको ये जगह कैसी लगी और कल आपने क्या किया था अपने birthday पे? मैंने कल बहुत enjoy करा था अपने birthday में. What did you do yesterday? I enjoyed yesterday and I played with my friends. Okay, very nice. So how did you like the place Kids Craze? I liked the place very much and the place was very nice. All right, thank you. Mom, Dad, parties are boring. Sis, bros, parties are jarring. अपने जहां में अपने ही rules हैं. Wish यहाँ पूरी सब कर ले, खुशियाँ सब जेबों में भर ले. इन्हें बातें अपनों की दुनिया